Hey guys, what's up and welcome back to my channel, coming out with a new topic from applied physics, that is electricity, one of the most interesting and logical topic from applied physics. So don't skip the video, see until the end because everything will gonna explain clearly in this video. So आज की हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी. सो नाउ बिफोर गोइंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स समझना ज़रूरी है. फॉर अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ चार्ज. सो हम हमारी 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज and another one is negative charge. Okay, there are two types of charge. One is positive charge and another one is negative charge. The thing you have to know is consider a positive charge and negative charge. Okay, always unlike charges, okay, always unlike charges attracts each other. Okay, always unlike charges attracts each other. Okay, it means the opposite charges. It means one positive charge and one negative charge will always attract each other. Okay, what I mean to say is अगर एक positive charge होगा और एक negative charge होगा, then they will attract each other. So now consider I have a negative charge और एक मेरे पास है negative charge. Okay, both I have a negative charge. So what happens is they repulse each other. They repulse each other. Repulse means they tries to go away from each other. They tries to go away from each other. So कभी भी दो unlike charges एक दूसरे के सामने आएंगे, then they will repel each other. It means कि वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. Similarly एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करिए और एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करिए. एज के ये दोनों सेम चार्जेस है, अगर ये दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे देन दे विल रिपल ईच अदर. इट मीन्स कि वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. सो विद द चार्ज कॉन्सेप्ट वी विल गोना अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी. सो वी केम थ्रू चार्ज. ओके, वी केम थ्रू चार्ज. नाउ चार्ज रेस्ट पोजिशन में हो सकता है एंड चार्ज मोशन में भी हो सकता है. Okay, charge may be in rest or charge may be in motion. When you study the behavior of charge in rest position, and that study is called electrostatics. Is called electrostatic. The study of a charge in rest position is called electrostatic. Okay, electrostatics. Now coming up to the motion. Okay, the motion can have, okay, motion means movement of anything from one place to another place. Okay, and movement के लिए velocity ज़रूरी है. So motion have velocity and velocity may be constant and variable. Constant and variable. So now what is meant by a constant velocity? Constant velocity is nothing but the velocity who doesn't change his magnitude while traveling from one point to the another point. Constant velocity उस velocity को कहते हैं कि अपनी मैग्नीट्यूड, इट मीन्स अपनी वैल्यू चेंज नहीं करना जब आप ट्रैवल कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. सिमिलरली केम टू द वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल कर रहे हैं एंड वो ट्रैवलिंग के टाइम आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स दैट दिस इज द वेरिएबल वेलोसिटी. सो नाउ if you study the behavior of charge at constant velocity, and that studies is called electric current. Electric current, most important point. The study of the charge at constant velocity is called electric current. Now coming up to the variable velocity, when the velocity of the charge is changed, okay, is changed while traveling, so some magnetism will get generated. So we will consider magnetism also. So the study of charge in variable velocity, okay, the study of charge when the motion of the charge consists of variable velocity,
That study is called electromagnetism. That study is called electromagnetism. So यहाँ पर I will explain you once again. चार्ज रेस्ट में भी होगा एंड मोशन में भी होगा. ओके, जरूरी नहीं है कि चार्ज रेस्ट में ही हो, मोशन में ही हो. इट मे बी इन रेस्ट और इट मे बी इन मोशन. जब चार्ज रेस्ट में होगा एंड जब आप रेस्ट पोजिशन पे चार्ज की बिहेवियर को स्टडी करेंगे, एंड दैट स्टडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. And motion may have two velocities. One is constant velocity and another one is variable velocity. Constant velocity उस velocity को कहते हैं जिसकी velocity का magnitude change ना हो जब आप एक point से दूसरे point पर travel कर रहे हैं. And एक charge के behavior को study करना जब एक charge की constant velocity हो, हम वो study को कहते हैं electric current. Similarly, came to the variable velocity. The study of charge in variable velocity is called electromagnetism. क्योंकि यहाँ पर जब एक चार्ज अपनी velocity को change करेगा, some magnetism will get generated and will take magnetism into the account. So we are calling it as electromagnetism. So hope you understood this concept. So in this syllabus, in this unit, it means I'm talking about electricity. We will gonna deal only about electric current in a whole video. Okay, it may be in parts or it may be in series. Okay, so let's talk about electric current. Electric current. Electric current. Electric current. एक सिंपल सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का. द रेट, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो अब इसको समझने के लिए कंसिडर करिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है. इट मीन्स आई हैव अ वायर. इट मे बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, इट मे बी मेड अप ऑफ आयरन, इट डजंट मैटर. सो आई हैव अ कंडक्टर और इस कंडक्टर को मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ. आई एम कनेक्टिंग दिस कंडक्टर टू द बैटरी. द बिगेस्ट टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज पॉजिटिव एंड द स्मॉलेस्ट टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नेगेटिव. सो आफ्टर कनेक्टिंग दिस कंडक्टर to with a battery, some motion of the charges will occur inside the conductor like this. Okay, generally वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब आप एक वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे देन ये वायर के तरफ एक फील्ड जनरेट होगी और उस फील्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. When a wire is connected to a battery, then electric field is generated across the wire or conductor. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होते हैं. ओके, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड tends a force on this electrons and this electrons will move in one direction. Consider I have a one cross sectional area of a wire having area A. So rate of flow of charge, okay, rate of flow of charge, it means rate of flow of charge. Basically the electric current is denoted by letter I, okay, the letter I. And electric current is defined as the rate of flow of charge through a unit cross sectional area. So rate of flow of charge per unit cross sectional area. This is the simplest definition of electric current. So what I'm trying to say is if I have a cross sectional area, okay, so how many charges is getting passed through this area per second is called electric current. In simple way, charge per time, okay, charge per time, okay, you have to per time, or you can say or per time. So in simple way, the electric current is the rate of flow of charge through a cross sectional area
per unit time. Okay, per unit time, it means charge per time. Okay, how many quantity of charge is passing through this area in per unit time will give us electric current. Okay, देखिए अब बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. अगर एक वायर कंसिडर किया जाए और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया जाए एक वायर में, सो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर होगा द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम. कितना चार्ज पास होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से इन पर यूनिट टाइम, वो हमें देगा इलेक्ट्रिक करंट. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय लेटर आई. ओके, सो नाउ आई इज इक्वल्स टू चार्ज की यूनिट्स है कुलम्स. ओके, चार्ज की यूनिट्स है कुलम्स डिवाइडेड बाय, एंड टाइम की यूनिट्स है सेकेंड्स. टाइम की यूनिट्स है सेकेंड. सो इन फिजिक्स coulombs per seconds is called ampere. So the unit for electric current, okay, unit for electric current is amperes. Okay, we're gonna say 2 amperes of current is flowing through the wire. Okay, for example, जब आप velocity कहते हैं तो 5 meter per second, 6 meter per second. Similarly, if you consider a weight, you will not say just 5. Okay, you will not say just 7. You say 7 kilogram or 7 gram or 7 milligram. Like that, current also have some unit. Okay, you didn't say current is 2, 3, 4, 5. The unit for current is ampere. Whenever you are going to tell the amount of current, you have to say 6 ampere or else 7 ampere, whatever the magnitude may be. Okay, so coulombs per second is called an ampere. That is the unit for electric current. So यहाँ पर I will gonna revise once again. So what is current? The basic definition for current is the rate of flow of charge through the cross-sectional area per unit time is called electric current. Electric current is nothing but charge by time, charge per time. The unit for charge is coulomb and the unit for time is second. In physics, coulombs per second is known as ampere. It means the unit for electric current is amperes. Okay, whenever you are going to say the amount of current, you should have to say 5 ampere, 7 ampere, okay, 8 ampere, like that. Okay, so this is all about electric current. So the next thing is voltage. The next thing is voltage. So now we're done with electric current, and now we are going to talk about voltage. So now for understanding voltage को समझने के लिए कंसिडर कि मेरे पास एक वायर है. I have a wire, okay, and I'm connecting this wire to the battery. बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ. So this will plus and this is minus. So always you should have to remember the direction of the current should always from positive terminal to the negative terminal. So as you know, यहाँ पर इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब इस वायर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, सो वायर के अक्रॉस यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. एज आई से अर्लियर, whenever you connect a conductor to a battery, then electric field will get generated across the conductor. So this electric field will exert some force on electron. Due to that, electron will get moved like this. Okay, what I am trying to say is जब एक वायर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा, then इस वायर के अक्रॉस इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना शुरू होंगे. सो यहाँ पर वोल्टेज इज डिनोटेड बाय लेटर V. सो वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन
work done by charge, work done by charge. So what is the meaning of voltage? कि जब आप एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, देन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी. इट मींस फोर्स एक्सर्ट करने के बाद चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करेगा. इट मींस सम वर्क इज डन. Okay, it means some work is done because one charge is moving from one point to the another point due to the force exerted by the electric field. So voltage is defined as the work done per charge, work done per charge. It is known as voltage. How much of work done in on charge is in on single charge is called voltage. Voltage is defined as the work done per charge, work done per unit charge, work done per unit charge is called voltage. Okay, always remember the work done per charge, per unit charge is called voltage. So V is equals to work done, the units for work done is joule, divided by the work done for charge is coulombs, joules. And the unit for charge is coulombs. The units for work done is joules and the units for charge is coulombs. In physics, joules by coulombs, joules per coulombs is called volts. So the units for voltage is volts. So whenever you are going to state the voltage, you have to say 5 volts, 6 volts, or 8 volts. Okay, like that you say the velocity 5 meter per second, 6 meter per second. Like that, whenever you are going to express the voltage, you will express the voltage in terms of volts. Okay, the units for voltage is volts. Okay, the units for voltage is volts. Volts is denoted by V. Okay, so this is all about voltage and current. Hope you understood. So let me explain once again. What is the electric current? Electric current is the rate of flow of charge. In simple way, rate of flow of charge, how many charge is flowing, is called electric current. And electric current is denoted by the letter I. And the actual definition for electric current is the rate of flow of charge through the cross sectional area of the wire in per unit time. It means charge is flowing per unit time. So charge per time, it means the unit for charge is coulombs and the unit for time is seconds. So coulombs per seconds in physics we call ampere. So the units for current is amperes. It is denoted by letter capital A. Then the next thing is voltage. Voltage is denoted by V. So as I say, when I connect a conductor with a battery, some electric field will get generated across the conductor. This electric field will exert some force on the electrons, and electrons move from one place to the another place. It means some work is done. So the voltage is defined as the work done per unit charge, work done on a per unit charge, work done on a per unit charge. So work done per unit charge. The units for work done is joules and the unit for charge is coulombs. So in physics, joules per coulombs is called volts and it is denoted by letter V. So this is electric current and the thing is called voltage. Voltage is also known as potential difference. Okay, voltage is also known as potential difference. This is the another name for voltage. Next one, so moving to the next. Okay, moving to the next, our next topic is Ohm's law.
our next topic is Ohm's law. Very, very important. Ohm's law. So for understanding the Ohm's law, let us consider I have a conductor. Let us consider I have a conductor and I have connected this conductor to a battery, plus minus. It means after connecting this conductor to a battery, the current will flow from positive terminal of the wire of the battery to the negative terminal of the battery. Always remember, okay, the thing you is to know is the current will always flow from positive charge to the negative positive terminals to the negative terminal, because positive terminal have a high potential difference and negative terminal has low potential difference. We will see, okay, later on. So consider a conductor. I have connected this conductor to a battery. Okay, after connecting this conductor to a battery, current will flow throughout the conductor. I am keeping the temperature of the wire. Constant. That means I am not changing the temperature of the wire. ओके मेरे पास एक वायर है और एक वायर को मैं कनेक्ट कर रहा हूं एक बैटरी से. ओके एक बैटरी से. सो आफ्टर कनेक्टिंग दिस वायर टू द बैटरी, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. देन जो वायर का टेम्परेचर होगा मैं उसे कांस्टेंट रख रहा हूं. इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द वायर डजंट चेंज फ्रॉम इट्स वैल्यू. सो आफ्टर कीपिंग द टेम्परेचर एज कांस्टेंट, Ohm's law states that the potential difference, okay, the potential difference, that is nothing but the voltage is directly proportional to the current produced in it. Okay, at constant temperature, okay, look the definition carefully. At constant temperature, the potential difference between the two ends of the conductor is directly proportional to the current produced in it. So what does Ohm's law state? If I keep the temperature of the wire constant and I connect this conductor to a battery, then the potential difference, it means the voltage is directly proportional to the current. Okay, it directly proportional to the current at constant temperature. It is the most important thing. If you connect a battery to a wire by keeping the temperature constant, then the voltage will be directly proportional to the current produced in it. So Ohm's law यहाँ पर क्या है? Ohm's law, for example, you have a conductor. Okay, you have a conductor and you connect this conductor to a battery, और उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद आप ये देखेंगे कि वोल्टेज जितना भी होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जितना भी ये एंड्स ऑफ द कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. इट मीन्स के जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे वोल्टेज का रेट बढ़ाएंगे, लाइकवाइज यहां पर करंट का रेट भी बढ़ जाएगा. सिमिलरली एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे वोल्टेज का रेट कम कर देंगे, उसी के साथ साथ करंट का रेट भी वहां पर कम हो जाएगा. ओके, दिस इज Ohm's law. Ohm's law states that the potential difference is directly proportional to the current at constant temperature. This is important thing. Okay, you have written voltage is directly proportional to the current, but if you don't mention the constant temperature, then this statement doesn't have a value.
because Ohm's law only works on constant temperature. ओके यहाँ पर जब आप एग्जाम में ओम्स लॉ का डेफिनेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बट आप यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंशन करना भूल गए, देन ये स्टेटमेंट का कुछ वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वर्क करता है. सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन constant temperature, because only at constant temperature voltage is directly proportional to the current. So we have expression V is directly proportional to I. Okay, voltage is directly proportional to current. Okay, in everywhere we don't keep proportionality sign. Okay, to remove this proportionality sign I have to add some constant. So V is equals to, if I remove this proportionality sign, I will get a constant as R, then I keep it as. Okay, so यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाना बहुत ज़रूरी है. सो जब एक प्रोपोर्शनलिटी की साइन हट जाएगी तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर वो कांस्टेंट है R, और ये R जो है वो है रेजिस्टेंस, वो है एक रेजिस्टेंस. यहाँ पर एक नई चीज शुरू होगी आपको, रेजिस्टेंस. सो यहां पर देखिए रेजिस्टेंस किसे कहते हैं. रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच opposes the flow of current. Okay, for example, if you have a conductor, current is flowing like this. Okay, current is flowing like this. एक कंडक्टर में जब एक करंट फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, देन एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. इट मींस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रुकावट लगाएगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर. ओके, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर. सो यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू आई, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, देन वहां पर नीचे चलेगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा. सो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई. R is equals to V by I. Then R is equals to, the units for voltage is volts divided by the units for current is amperes. So in physics, volts per amperes is called ohms. Okay, the symbol of ohms is like this. Okay, so the units for resistance is ohms. What is resistance? The obstruction, I will write the definition. The obstruction to the flow of current, okay, the obstruction to the flow of current, okay, is called resistance is one of the property of material. Okay, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. इट हैव इट्स ओन रेजिस्टिविटी. ओके, सो हियर द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. ओके, करंट के फ्लो में रुकावटें पैदा करना, इट इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस. ओके, इफ यू ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, the material have some property, and that property is called resistance. Resistance is nothing but voltage divided by time. Okay, voltage divided by time, and R is equals to, the units for voltage is volts and the units for current is ampere. In physics, the volt per ampere is called ohms, and the ohms is denoted by this letter. Okay, this expression. The units for resistance is ohm. Okay, this is about Ohm's law. So what is Ohm's law? At constant temperature, the potential difference between the two ends of the conductor is directly proportional to the current produced in it. Okay, जब आप एक कंडक्टर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, देन जितना भी वहां पर वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वोल्टेज का रेट बढ़ेगा तो वहां पर ऑब्वियसली करंट का रेट भी बढ़ जाएगा. अगर वोल्टेज का रेट कम हो जाएगा देन ऑब्वियसली करंट का रेट भी कम हो जाएगा. हमारे पास एक्सप्रेशन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए I have added a constant R, and here R is called resistance. And resistance, what is a resistance? The obstruction to the flow of current. It means this is a property which tries to oppose the flow of current.
ओके, विच ट्राइज टू, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसमें वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, और ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट V बाय I। ओके, क्योंकि यहां पर I मल्टीप्लीकेशन में I वांट ओनली R, सो I will send this I to the left side, it will goes in the denominator, so V by I. The units for voltage is volts and the units for current is ampere, so R is equals to volts per ampere. So यहाँ पर in physics volts per ampere is called ohms and the units for resistance is ohms, and ohms is denoted by this letter like this. Okay, like this. Whenever you are going to say resistance 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, like this you have to state the resistance. So this is all about the Ohm's law. Next, the next thing is next thing is, अब यहां पर रेजिस्टेंस, ओके, बात की जाएगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन so many factors. Okay, it depends on length of the conductor and it depends of बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. So the first thing is it depends on length of the wire. Length of the wire. Length of the wire. Resistance is depend upon the length of the wire. और यहाँ पर पहला रिलेशन है लेंथ ऑफ द वायर और रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the wire. It means resistance will increase if we increase the length of the wire, and resistance will decrease if we decrease the length of the wire. Okay, resistance will increase if the length of the wire increases, and if we decrease the length of the wire, automatically the resistance will decreases. So here this is first expression. Okay, R is directly proportional to L. This is first expression. Second one, the resistance is depend upon the area of cross section. The area of cross section. Okay, the area of cross section means if you have a wire like this, the area of cross section like this. Okay, so the resistance is depend upon area of cross section also. So the relation is the resistance is inversely proportional to the area of cross section. It means if the area of cross section is decreases, okay, if the area of cross section is decreases, resistance will increases. If area increases, resistance will also decreases. So यहाँ पर दूसरा रिलेशन ये है कि R is inversely proportional to area of cross section, यानी 1 by A. इट मीन्स के यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब रिड्यूस होगा देन वहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जब एरिया वहाँ पर इंक्रीज होगा देन रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज होगा. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देंगे वहाँ पर रेजिस्टेंस का रेट बढ़ जाएगा, और जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेट बढ़ा देंगे देन वहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. कंसीडर इट एज इक्वेशन 2. अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिखेंगे. ओके, वी विल राइट टुगेदर. सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by A. So I can write this term as R is directly proportional to L by A. Okay, I have merged this equation. So R is directly proportional to L by A. So in previous Ohm's law I have removed the constant of proportionality. So यहाँ पर भी constant of proportionality का remove करना बहुत ज़रूरी है. So R is equals to जब ये proportionality की sign हट जाएगी, so यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड होगा लाइक दिस, और ये कांस्टेंट को हम कहेंगे रो. दिस इज कॉल्ड एज रो. सो रो L by A. ओके, रो L by A. रो इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक
resistivity. Specific resistivity. Okay, specific resistivity. So now what is look at here, this is resistance rho L by A. Problems आते हैं कि length of the wire is doubled, area of cross section remains same, then what is the specific resistivity? It we will gonna find. So the units for specific resistivity is ohm meter. Okay, ohm meter. Are you getting my point? So how to find the units? Check it out. So what I have the expression R is equals to rho L by A. I am sending this A to here, so R into A by L is equals to rho. What are the units for resistance? Ohms. The units for area is meter square divided by the unit for length is meter. Meter will get cancelled. The remaining term is ohm meter. So the units for specific resistance is ohm meter. Okay, till here revise the concepts carefully, and you have doubt, so mention your doubt in the comment box. So tab tak take care and stay focused. Goodbye.